first of all, let's learn a bit about DEVSINC. We know that it is an IT services company. So what is an IT services company? Right. Can't we just call it an IT company? Basically, Narowal में करने को कुछ और होता नहीं था तो बस पढ़ लिया. Assalamu alaikum everyone. This is Ammaar bin Salim. Welcome to another episode of Outloud with Ammaar. This is a very special episode in the sense that we have just started this season 4 of Outloud with Ammaar, episode 1, and we are here from DEVSINC Studios in Lahore. And DEVSINC is the fastest growing IT company in Pakistan, and I am privileged to be conducting this conversation with a very special guest, Talha Maqsood, who is the CEO of DEVSINC. Talha, assalamu alaikum. Welcome. Thank you for having me, Ammaar. Thank you for having me, as a matter of fact. This is DEVSINC Studio. Yeah, exactly. So it's good to have you here, and I don't know who would be interviewing who. Let's see where that goes. Yeah. But again, we have been trying to do this conversation. And remember, last time when we had started the podcast, it ended because of the internet connection, and you're very kind to offer me the space. Sure. And so we're going to be talking about so many concerns that are facing the Pakistan's overall growth, the exports, IT services, the brand image of Pakistan when it comes to exporting our services to the world outside. Right. But before we delve into those discussion areas, let's first learn a bit about you. Who is Talha Maqsood, apart from being the CEO of DEVSINC? Right. So Talha Maqsood is a person who came from a very humble background. I started off from a small city, that's Narowal. Pehle jo hai, it is Tehsil of Sialkot, now it's a district. So that is my hometown. I came to Lahore back in 2009. And how old were you at that time? I started my FSc here in GCU. Okay. Yeah. Right. So that's how I came Lahore. So you must be a very bright student. GCU का तो famous है ना कि bright students हैं. बस crème de la crème. Yeah. तो basically Narowal में करने को कुछ और होता नहीं था तो बस पढ़ लिया. I always knew how to get grades. GCU, then PUCIT, and then DEVSINC. And since 2017, I have been with DEVSINC, and this is going really good. Like, I started off as a software engineer. और यहाँ पे इतनी खूबसूरत चीज़ है कि just based on your expertise and your professional abilities, you can be the CEO of the company. No matter who is what is your background, या आप कहाँ से आए हो. We always believe in talent. So that is the beauty that we usually allow and follow here. So that's why we are sitting together. Yeah, absolutely, for sure. And वो transition कैसी थी when you came from Narowal? And मतलब Narowal is a very, even today, इतने सालों के बाद भी, it's not like that big of a city. So इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहता as compared to cities like Lahore, Islamabad, Karachi. तो वो उस time पे FSC में आना, had you ever thought कि मैं इस level पे पहुँच जाऊँगा, इतना contribute करूँगा? To be very honest, एक चीज़ सिर्फ थी कि कुछ ऐसा करना है कि जिसकी बेस पे ना I can proudly say I am from Narowal, and Narowal can say this is our guy. Yeah. So that is something I always had in mind. उस टाइम पे भी सिर्फ ये नहीं पता था करना कैसे, लेकिन ये सोचा ज़रूर था कि at some point in life ना I definitely want to return something back. And that's what we have started now as well, under the platform of DEVSINC. उस टाइम पे जब आया था तो things were very confusing for me. It's like एक बहुत छोटी सी जगह पे एक समंदर में आ जाना. Things were very tough. But आपको चीज़ें सिखा देती हैं कि आपने कैसे चलना है, क्या होना है. And I learned a lot of things. And today, as we are talking, now we are running some things, some non-tech trainings जिन लोगों को हम enable करेंगे towards technology, and that we are running with the local government that is in Narowal. So we have started that. So that's my way of returning something under the platform of DEVSINC. Right, something for the community. Yeah, again. exactly.
Right. Okay. So we're going to expand on that later, but first of all, let's learn a bit about DevSync. एक तो DevSync के बारे में we know that it is an IT services company. So what is an IT services company? Right. Can't we just call it an IT company? There are two kind of companies. One is multiple different names. लोगों को ना बहुत सारे नाम पता होंगे. आम ज़बान में अगर बात करें तो फेसबुक का भी पता है लोगों को, व्हाट्सएप का भी पता है. ये सारी भी IT प्रोडक्ट्स हैं. तो देयर आर IT प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो सिर्फ इसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम करेंगे. देन देयर आर सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि आपको आपकी IT नीड्स के लिहाज से डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड्स करेंगी. तो व्हाट वी वांट टू डू इज़ लाइक इफ़ वी फोकस ऑन वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अगर वो प्रोडक्ट चल रही है ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट बंद हो गई या कल को उसमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो देयर वुड बी लेज और देयर वुड बी लाइक पीपल वुड बी लेड ऑफ. Redundant कर दिया. Yeah, exactly. Because now you're doing something again and again. Maybe there is no growth and something like that. But with IT services company, because mainly अगर हम बात करें जो आपने बात शुरू की कि like कैसे why fastest growing IT company? Because the problem that we are trying to solve here is कि हम क्या ऐसी चीज़ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें जिसका पाकिस्तान को फ़ायदा हो. एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास कोई ऐसा रॉ मटेरियल तो नहीं है जो हम यहाँ पे बना लें. ठीक. तो जो टिपिकल एक्सपोर्ट है उस पर हम नहीं कर सकते. दी ओनली सोल्यूशन राइट नाउ इज़ एक्सपोर्टिंग IT सर्विसेज, राइट. बिकॉज एवरी अदर पर्सन हु मे बी सिटिंग मे बी इन गवादर या कहीं पे कोयटा या कहीं पे भी लसबिरान में जाके बैठा हुआ है, कहीं पे भी दुनिया में किसी भी जगह पे बैठा हुआ है, इन पाकिस्तान किसी भी छोटे से छोटी जगह बैठा हुआ है. इफ़ ही हैज़ और शी हैज़ एन इंटरनेट कनेक्शन एंड अ गुड लैपटॉप, तो व्हाई नॉट सेल आउट दोज सर्विसेज. वी एज अ सर्विसेज बेस्ड IT फर्म वी एनेबल पीपल कि वो अपनी सर्विसेज को जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल ऑफ कर सकें. एंड बाय दैट वी विल डेफिनेटली जनरेट रेवेन्यू दैट विल बी कमिंग इन साइड पाकिस्तान, इंक्रीजिंग एंड लाइक इम्प्रूविंग आवर इकोनॉमी. दुनिया किस तरह से पाकिस्तान से सर्विसेज लेने को विलिंग होती है? मतलब डू यू थिंक दैट पीपल आर विलिंग टू गिव बिजनेस टू पाकिस्तानी डेवलपर्स एंड पाकिस्तानी सर्विस प्रोवाइडर्स more as compared to Indians? To be very honest, no, because अगर हम बात करें ना तो the image that we have right now in a global market, that's not a very good image. As Pakistan, we don't have that very bright image जिसकी हम बात कर सकते हैं. लेकिन this is something जो कि लोगों को सिखाई गई है, तो we can teach them differently as well. Through our work, through our through our conversations with them. How we are dealing with that is that DEVSINC has its entity in US as well. Okay. Right? So we are a global company. We are working in US, we are working in Norway, we are working in Dubai as well. We are planning to work in like the overall MENA region. So we have targeted the audience, and what we want to do is कि हम अपने talent को expose off करें उन लोगों के सामने कि those people who feel कि अच्छा यार पाकिस्तान में तो अच्छा टैलेंट नहीं है. मसला यहाँ पे सिर्फ ये है कि टैलेंट जो है वो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड है. थ्रू आउट द ग्लोब टैलेंट इज़ अवेलेबल, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं. अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो व्हाट वी वांट टू डू इज़ कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की अगर हम बात करें या ग्रोइंग कंट्री की अगर हम बात करें लाइक पाकिस्तान, तो यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, किस तरह से एक मिडल मैन के तौर पे एक्ट कर सकते हैं उन लोगों के साथ कि who are good technically but they don't have the exposure to work with people. Like बाहर किसी को for example they want to build an app called Uber for dogs. Uber for dogs. Uber for dogs, right? Because those people, like if we talk about US, maybe they don't have time to walk their dogs. So it's an app for people to walk their dogs. Yeah, exactly. They want to outsource this thing. That's just one example, right? यहाँ पे लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहाँ पे वो अपने कुत्तों की वॉक के लिए जो है वो थोड़ा सा तो that's the uneven distribution of opportunities. We want this thing to be captured and we want them to work with us, realize them कि अच्छा these people are equally talented as people living in the US. किसी की क्या गलती है अगर वो पाकिस्तान में पैदा हो गया, he's talented, she's talented, why not give him or her the opportunity? That's where the IT services companies stand. Yeah, they come in, they fulfill this need that as a company, as an entity, we encourage the people to come on board, and we give the the security and all sorts of alliances to the people जिनको बाहर कोई insecurities हैं
कि किस तरह से काम होगा और क्या चीज़ें होंगी. तो वी आर हेयर टू लाइक फैसिलिटेट देम, उनकी सारी परेशानियाँ और वो सोच ख़त्म करने के लिए वो बैलेंस आउट करना पड़ता है कि वो जो माइंड सेट है ना कि यार ये तो जो है वो काम ठीक नहीं करते होंगे, सिर्फ नेटफ्लिक्स से देख के पाकिस्तान का एक इमेज बन गया. या किसी भी जगह से लाइक वेन एवर इवन इन हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज़ में देखते हैं तो पाकिस्तानी या मुस्लिम्स का एक ही इमेज है, गले में रुमाल होगा, सर पे टोपी होगी, आंखों में सुरमा होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. तो ये इमेज बनने में जहाँ पे टाइम लगा तो चेंज करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा. दैट्स वेयर वी स्टैंड. Acha, I was in a conversation with Badr Krishna a while ago, and we were discussing the same thing, and he presented me with a wonderful point that, you know, when it comes to India and when we talk about India getting all that business from across the globe, there's this Bollywood image that comes in, and there's nothing like that supporting Pakistan. So don't you think it's added pressure on all those companies who are exporting services or products outside Pakistan to work on the overall branding of the country as well? यार वो तो डबल प्रेशर हो जाता है यार. एक तरफ हम बता रहे हैं हम काबिल भी हैं, but at the same way telling you that we're also good people to work with. Exactly. The reason being that it's called narrative building. The narrative that has already built up for us is not a very positive one. Problem is कि सबसे पहले हमें फिक्स क्या करना है. क्या हम अपना narrative फिक्स करने पे निकल जाएं कि यार नहीं हमें अच्छा समझो, या हम ये कहें कि नहीं हमसे काम करा के देख लो. आई थिंक इट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ. लाइक वी स्टार्ट वर्किंग विद पीपल एंड देन बिल्ड अप द नैरेटिव एज वेल. जहाँ पे आपने बात की इंडिया की, इंडिया इज़ 40 years ahead of us. We definitely need to admit that fact. सिर्फ ये सोच लेना कि बॉर्डर पे टांग किसने ज़्यादा ऊंची उठाई थी, that is not the concern. आज वो चंद्रयान के थ्रू लैंड कर रहे हैं मून पे, राइट? एंड वी आर स्टिल लाइक trying to think about that. We are not even thinking about that. We are having our internal affair problems और वगैरह वगैरह बहुत सारे मसले हैं. अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको these are the government level problems maybe. What an individual can do, what an organization can do. Either we can say कि अच्छा गवर्नमेंट चुस्त है, either we can say कि यार हर एक चीज़ ख़राब हो रही है. We start complaining about things, or we start doing something about it. So we have chosen the later option कि हम कुछ ना कुछ अपने ओन पे करना शुरू तो करें, like in our capacity whatever we can do. And this chain of command and this change that it will bring, this is huge. Because if we just talk about DEVSINC in particular, we have attracted a lot of youth that is sold to this mission कि हमने वाकई जो है वो हार्ड वर्क करके कुछ ना कुछ निकालना है पाकिस्तान के लिए. So we started off humbly as a company as well. Right now it's a 1700 employee company and we are targeting towards having 80,000 employees by 80,000? Exactly. 80,000 employees by end of 2030. It's just a 7-year goal. इसको अगर सिर्फ मैप करें तो सिंपल मैथ है. 70% growth in terms of employee growth over annum. the years. Yeah, per annum, minimum 70% growth. That's it. सिर्फ इतनी ग्रोथ चाहिए. हाँ, जहाँ पे सीलिंग की बात आती है तो when we were below 100 तो हमें लगता था 100 अचीव करना बहुत मुश्किल है. We achieved that. जब हम 100 हुए तो हमें लगता था कि next 1000 अचीव करेंगे तो मसला होगा. When we were 1000 employee company तो अब हमें जो है वो next target शायद इतना फील नहीं हो रहा. 80,000 के लिए the moment we are 10,000 there is no stopping us. And this employment, when we talk about कि हमने ये employees produce करते हैं, that is only for the betterment of the lower middle class or the middle class tier. Because when we provide employment to people, it's not about कि हम सिर्फ एक बंदे को जो है वो uplift करें. It's about their whole family, right? They would have a better livelihood, they would have a better lifestyle. चीज़ें उनके लिए जब बेहतर होंगी तो डेफिनेटली दे वुड बी थिंकिंग क्लियरली. रोटी कपड़ा मकान के जब मसले हल हो जाएंगे ना तो हम उन चीज़ों से निकल के कुछ आगे सोचेंगे. एक बंदे को जब तक माय फादर यूज्ड टू से कि एक भूखे को जब आप पूछोगे ना 2 + 2 इज़ व्हाट, तो ही विल ऑलवेज से कि 2 + 2 4 रोटियाँ, राइट? बिकॉज उसके माइंड में जो चीज़ चल रही है, द कोर थिंग दैट इज़ in his mind or in her mind is कि मुझे आज रात को या आज फलाने दिन पे क्या खाने को मिलेगा, right? गुजारना कैसे है. Exactly. तो if we fulfill the basic necessities of the people, they would then think of doing something bigger. So that's the main
goal here, right? कि सिर्फ और सिर्फ जो जिनके पास आसाइशें हैं या जो अमीर हैं उनको मज़ीद अमीर नहीं बनाना. वी नीड टू uplift the middle tier. So that's the main goal here, right? To produce more employments, to produce more jobs, to produce more opportunities for even our country. When you say that the number of people that DevSync is gonna employ by 2030 would be 80,000, so do you think that the demand matches up? मतलब demand इतनी होगी, या would you be playing the role of the government that we are gonna employ people and we're not gonna lay them off? I know there are different strategies, right? So if we talk about कि यूनिवर्सिटी कितना प्रोड्यूस कर रही है, अगर आज की रेट पे देख लेना तो इस टाइम पे पर एनम सारी एफिलिएटेड कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ निकाल लेना तो आईटी की जो प्रोडक्शन है ना, आईटी इंजीनियर्स की, वो रफली है 25,000 to 27,000. अच्छा. बस कंसिडरिंग कि जब डेवजिंक इस लेवल पे पहुंच जाएगा और अगले साल हमें उससे ज़्यादा लोग चाहिए होंगे तो शायद यूनिवर्सिटीज़ से जो लोग प्रोड्यूस हो रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, राइट, वो शायद इतने ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो सकें जितनी शायद डेवजिंक को ज़रूरत है. ओके. Not talking about other companies, because definitely they are growing with us as well, and our mission is not to just grow alone. We want to uplift this community as well, this IT community as well. Right. That's the main goal. We don't want we should be on top. No, what we want to achieve is let's grow together. That's why to answer your question, हमने बहुत सारी और चीज़ें start की हैं. We have DevSync Academy, and under that we have started non-tech trainings, right? अब वो non-tech trainings क्या कर रही हैं? We know कि अच्छा सारी की सारी requirement technical side से पूरी नहीं होंगी, but there's a difference in supply and demand जो कि globally है. In 2024 and 2025 ये एक इंटरनेशनल मैगजीन की रिपोर्ट है कि there would be a shortage of supply for IT professionals, right? Okay. अब जब वो हो जाएगी तो डेफिनेटली ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग भी आएंगे, ग्रोइंग जो हैं आपकी कंट्रीज़ उनके लोग भी केटर हो रहे होंगे, अभी भी हो रहे हैं, तब ज़्यादा होंगे, राइट? तो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. अब जहाँ पे बात आ जाती है नॉन टेक लोगों की, ऐसे लोग जो शायद मे बी जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कुछ भी कर लिया, कोई फार्मेसी से है, कोई किसी डॉक्टर बैकग्राउंड से है, एंड दे वांट टू स्विच देयर करियर, वी आर हेल्पिंग देम आउट एज वेल. Like we have started this initiative of non-tech trainings कि हम उन लोगों को टेक enable करते हैं in a span of 3 months, जिसके अंदर हम उनको from the very scratch level we train them that how they can be the front-end developers, right? In 3 months they are sellable to be the front-end developers, right? They can totally shift their careers if their current career is not supporting them. I see. And these are the trainings for the people who have literally no background in tech at all. Yeah. यानी मैंने अगर करना हो तो मैं आपके पास आ जाऊँ, मैं कहूँ मुझे आप ट्रेन करवा दें, and in 3 months I can still work on development. You can start working on the current actual projects. Right. You can start bringing in your own work. Right. You can freelance. You can do contract jobs. Okay. Right. So that is something that will be adding value in your life and in the economy as well. So main target is definitely जब भी हम गोल की बात करते हैं ना, there must be a goal that we want to achieve. So we don't talk about कि यार हमें इतना revenue चाहिए, हमें ये चीज़ें चाहिए. That's a byproduct for us. The main thing that we are focusing on is कि हम कितनी employments, कितनी jobs produce कर सकेंगे. That's the main target that we are focusing on. Okay. This is one thing, like non-tech trainings. Then there are multiple different things. We have Founders Club where we, जो भी small startups हैं या छोटे businesses हैं, जिस level पे कभी हम थे, जो हमारे प्रॉब्लम्स थे, जो हमने फेस किए, जिसको ओवरकम करके हम यहाँ तक पहुँचे, राइट? तो उन लोगों के वो मसले हम उनको कैसे बता सकते हैं कि हमने इस तरह से सॉल्व किए थे, मे बी दिस थिंग विल हेल्प यू आउट. वी हैव द फाउंडर्स क्लब जहाँ पे लोग ओपनली आते हैं विदाउट एनी चार्जेस. वी डोंट चार्ज एनीवन फॉर ऑल दीज फैसिलिटीज़. इवन समटाइम्स वी पे देम. कुछ ऐसे फाउंडर्स क्लब के स्टार्टअप्स या बिजनेसेस या आइडियाज़ जो हमसे अलाइन होते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, या जिनको हम किसी भी हद तक फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो वी डू दैट एज वेल. लाइक आई स्टिल रिमेंबर कि रिसेंटली डेवजिंक के टूर्स जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं, और देयर इज दिस टूरिज्म कंपनी, the CEO of that company is a part of our founders club. So from there हमारी बातचीत हुई, and we thought of giving business to the person. What we need to do is give others a chance, because somebody gave us chances on our time. We grew from there. Exactly. So let's grow together. That's our main motto. We're not here in
ruining anyone else's business. हमें basically जो है वो ये चीज़ नहीं चाहिए. The only purpose we have is 80,000 employees by end of 2030 under any company supervised by DEVSINC or not, right? Because that's the goal that we really follow. So you sound very optimistic about having 80,000 people by 2030, and I'm like very happy because there are not many companies in Pakistan, not many people that I have come across with this vision of not maximizing just the profit but also employment opportunities across Pakistan. Last year, when we look at the statistics, the growth of exports, IT exports, was almost 15%, right? And the exports percentage of increase in exports decreased in like Korea and Bangladesh and Pakistan. Surprisingly, it increased 20% for India. So why did the growth then remain sluggish for Pakistan? To answer this, I need you to answer some of the questions. Do you know who the CEO of Google is? Sundar. Yeah, he's an Indian. Every other big giant, Indians are there. Exactly. Right. Because Starbucks का CEO है, मास्टरकार्ड का एक्स CEO जो है वो वर्ल्ड बैंक में चला गया, अजय बंगा. So, हर जगह पे आपको इंडियन CEO मिलता है, पाकिस्तानी बड़े कम मिलते हैं. रीज़न जो है ना वो सिर्फ उनकी टॉप मैनेजमेंट में होना नहीं है इंडिया की ग्रोथ की. द थिंग इज़ दैट द डिसीजन मेकर्स दे ऑल्सो अपलिफ्ट देयर जूनियर्स एज वेल. That is the beauty. Yeah, that is the beauty that they do. Like even if they are in the US, or even if they are anywhere in the world, they encourage people from India, right? That's the thing that we want to do as well. Okay. Right? We want to sell out people from Pakistan, right? And we want to promote the other IT firms. अच्छा जहाँ पे आपने बात की ना इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जितना फोकस IT को है वो शायद हमने रियलाइज़ बहुत लेट किया, राइट? इंडिया में 3 कंपनीज अगर उठा लें, विप्रो, टाटा एंड TCS, राइट? हाँ, ठीक है. यू पिक दीज 3 कंपनीज, इनका टोटल रेवेन्यू शायद हमारे IT के एक्सपोर्ट से ज़्यादा होगा, राइट? दे हैव लाइक दे आर द कंपनीज वी शुड लुक फॉरवर्ड टू. दे आर द कंपनीज we need to be inspired from. We need to be the next TCS, we need to be the next Wipro, we need to be the next Infosys. अब ये वो सारी जगह हैं, ये वो सारी कंपनीज हैं that are doing amazing job. अब जहाँ पे आपने बात की कि इंडिया ग्रो कर रहा है और हम पीछे हैं, आई थिंक द रेस इज़ नॉट के हम सिर्फ जो है वो what we need to have is healthy competition, right? And we need to promote ourselves as well. Internally, like among the IT firms too. ये कैसे होगा, इसमें क्या क्या परेशानियाँ हैं? डेफिनेटली इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर वी कैन से कि अच्छा गवर्नमेंट शुड बी इन्वॉल्व या ये हो सकता है. ऑल वी नीड इज़ वी डोंट नीड स्पेस, वी डोंट नीड एनीथिंग. द ओनली थिंग दैट वी रियली नीड इज़ कि हमारे ISPs बेहतर हो जाएं, हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स बेहतर हो जाएं. दैट्स द ओनली थिंग दैट वी रियली नीड. रिसेंटली 9 मई का वाक़या हुआ. That's a very unfortunate thing. Internet was disrupted across Pakistan. Definitely, yeah. Exactly. And there are bigger freelancing websites like Fiverr and Upwork. Yeah. They have posted a banner on their sites. Yeah, exactly. Yeah, these people are working from Pakistan. They don't have a good internet connection. Work with them at your own discrepancy, right? So people they don't want to work with us just based on the fact कि शायद उनका काम डिले होगा. So these things they affect as well. मतलब देखा जाए तो it's a supply chain disruption ही ना. Exactly. अब ये जितना मसला है ना, हमें सिर्फ if we want to strong arm the overall economy, right now the only solution is IT exports. Nothing else. लाइट के मसले हैं, गैस के मसले हैं, ये सारे जितने भी मसले हैं ना, ये मसले आपकी टेक्सटाइल को भी पड़ेंगे, ये मसले आपकी बाकी एक्सपोर्ट्स को भी पड़ेंगे. IT में ये प्रॉब्लम है नहीं बॉस. IT के अंदर व्हाट वी वांट इज स्पेस है, ठीक है, हमें नहीं चाहिए. एज इन व्हाट वी ओनली वांट इज कि यार connectivity should be better. We need to be connected with the global world, right? That's the only thing. Business will follow. Business will come when we have this, connection with the clients. They know that we can always have this person sitting in Pakistan, always connected to us. Okay. Right? उनको रोज़ ये मसले नहीं हो रहे कि आज पता नहीं अवेलेबल होगा नहीं, आज मेरा डेमो है, आज मेरी मीटिंग है एंड कनेक्शन होगा या नहीं. Exactly. तो दिस इज़ जस्ट like very minimum problem that we need to solve. यानी कि फिर इकोनॉमी, और अगर देखा जाए कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन कह लें उसको,
या इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें, उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट इवन आईटी सेक्टर पर है तो सही. मतलब अगर एंड मतलब यू को टेल अस विद योर ओन एक्सपीरियंस एज वेल, एनलाइटन अस कि जब ये इस तरह की डिस्ट्रप्शंस वगैरह आती हैं, या पाकिस्तान में तो एक सिंपल टूल है ना कि जब भी कोई आपका वो हुआ थोड़ा सा इस किस्म का मसला, आपने इंटरनेट ऑफ कर दिया ताकि वो ना फिर सिक्योरिटी का भी हो गया कंसर्न सॉल्व, और आपने अपने इन्फॉर्मेशन जो चैनलाइज करनी वही ब्लॉक कर दी. हाउ डिड इट इम्पैक्ट DEVSINC? The bigger companies, they may don't have these sort of problems. They have all sorts of backups available. Like इंटरनेट के मसले होंगे तो शायद कुछ dedicated ISPs की हों, लाइट के मसले होंगे तो बैकअप जनरेटर्स होंगे. Everything is there. But this is not about just one company. This is not about the bigger giants, right? Okay. There is a community of startups. There is a community बहुत छोटे लेवल से जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपना कोई स्टार्टअप, अपना कोई आइडिया, अपना कोई प्रोडक्ट, राइट? या वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, या वो फ्रीलांस भी करना चाह रहे हैं. द फीमेल्स दैट कैन नॉट कम आउटसाइड ऑफ देयर हाउसेस, राइट, दे गेट अफेक्टेड अ लॉट. तो ये मसले किसी ना किसी हद तक बिगर कंपनीज को भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें जो है वो वाले लोग पिस जाते हैं जो कि शायद जिनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट भी हो रहा होता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड इन टर्म्स ऑफ देयर क्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स द क्लाइंट्स. सो लेट्स चेंज द टॉपिक अ बिट, थोड़ा सा हम और चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं. What do you think, what sort of a job have the universities in Pakistan been doing in terms of preparing the students with the right skills, the sort of skills that are going to land them good jobs, and even, you know, skills जिससे इनको access मिल जाती है wider market बाहर? Right. Curriculum जो है वो that is like it's a dilemma कि वो that's always outdated. वो चाहे primary level पे हो, secondary, even universities के अंदर. चाहे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हों? There are good universities we have started syncing up with. We have this vertical as well जहाँ पे हम industry academia gap को fulfill करना चाह रहे हैं. Okay. Right? So what that is actually कि we want to tell them कि this is what industry demands, and this is something that you should teach your students, right? For them to be ready for the upcoming industry, right? Maybe the things that they are teaching them, that's old school, right? So for that हमें शायद teachers को भी train करना है. So we have another program starting very soon, that is train the trainers. Train the trainers program. Yeah. Okay, right. That's basically for the teachers कि we tell them, sit together with them और उनको ये चीज़ें थोड़ी सी साथ में सिखाएं कि what industry actually demands. ये particular technologies हैं जिसकी तरफ रुझान हो रहा है. This is something that maybe you should learn. कैसे industry standards चल रहे हैं. This is something that you need to teach your students, right? Okay. So by doing that, we will be bridging that industry academia gap. Once that is fulfilled, because we cannot simply say to the university कि अच्छा आप ABC subject पढ़ा रहे हैं, XYZ पे shift हो जाए. A lot of things are involved in that, HEC approval and whatnot. Let's not go there right now. But the people that जो अभी भी जो लोग यूनिवर्सिटी से पैदा हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी जो लोग प्रोड्यूस कर रही है, every other company has their own timeline of training them. 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना. In DEVSINC we have a very extensive training program कि जो बंदा आ भी जाता है after clearing the university, मैक्सिमम हमारा भी जो है वो 3 माह का उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है. Okay, right. जिसके अंदर we make him or her industry ready in terms of communication, in terms of technologies, in terms of interpersonal skills, in terms of client dealing, right? Right. So everything is covered for. अब ये जो 3 माह की effort है ना, this can be minimized. We can make people plug and play right after the university if we train the trainers, right? With the mindset कि उन लोगों ने जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इस अंदाज में प्रोड्यूस हो कि वो आते साथ ही प्लग एंड प्ले हो सकें. अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी सारी. इसमें प्रॉब्लम्स ये हैं कि जो ट्रेनर्स हैं themselves मे बी दे आर नॉट अर्निंग अ लॉट कि वो इतनी पेन क्यों लें. तो मे बी so with this program we are thinking of maybe even paying the trainers for the to come and learn. Exactly, yeah. Okay. Because जो हमने स्टार्ट पे बात की है ना, the problems that we are trying to solve, that's not money. Yeah. That's uplifting, right? We want to uplift the people. Acha, okay. So all these programs, these involve a lot of human effort, these involve a lot of finances. Yeah. So that's why हम इसको बहुत limited start करते हैं because we have a history कि जो चीज़ एक दफ़ा start कर ली जाए उसको ख़त्म ना किया जाए, उसको बढ़ाएं
या कम से कम उसी पेस पे चलाते रहें, चलाते right? रहे, ओके. तो these all things, these add value to people's life, Right. yet they make a dent in our finances as well. So Okay. yeah, with this current economy and everything, we need to be very discreet कि हम क्या decisions लें और क्या ना लें. तो these are some of the programs that we have aligned for like the very next future. अब ये सारी Okay. चीज़ें वो हैं that will fill up this gap. Exact question का आंसर ये है definitely कि there are gaps that the people that are getting produced from the university, every industry knows basically कि maybe they are industry ready, maybe they are not, right? So जो भी आता है हम उसको सेम फनल से फिर एक दफ़ा गुजार ज़रूर लेते हैं, उसकी प्रॉपर Right. ट्रेनिंग करा लेते हैं, बट वी वांट टू मिनिमाइज दिस टाइम पीरियड. लेट्स से 1000 बंदा हायर किया और 1000 बंदे पे 3 महीने की एफर्ट भी है, 3 माह की सैलरीज भी हैं, एवरीथिंग, राइट? तो दैट इज़ अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. वी वांट टू मिनिमाइज दैट. और सेम चीज़ इफ़ वी गिव टू द ट्रेनर्स, राइट, दे विल बी हैप्पी एज वेल. लोगों को सिखाने में भी खुश होंगे, सीखने में भी खुश होंगे, एंड डेफिनेटली इससे हमारी जो टीचिंग कम्युनिटी है वो भी अपलिफ्ट होगी. Acha, an extension of the same point, given that we are training the teachers, which is something that sounds very, not only just vital, but it's also noble that you're doing it without charging any money. Rather, you're paying something back to them to encourage them. क्या ऐसा होता है, and have you seen it happening कि पैसे के अलावा भी एप्टीट्यूड ना हो लर्न करने का? हाँ, इस तरह से भी देखें, जो ट्रेनर्स ट्रेन हो रहे होंगे वो उस ही स्टैंडर्ड पे ट्रेन हो रहे हैं कि अगर वो अपनी ट्रेनिंग्स को एक्चुअली रिलीजियसली ले लें तो दे कैन बी ऑल्सो द पीपल हु आर प्लग एंड प्ले, राइट? अच्छा, ठीक है. तो जस्ट इमेजिन कि जैसे हमने बात की नॉन टेक ट्रेनिंग्स की, द टीचर्स लाई अंडर दैट एज वेल, राइट? ओके. तो अगर हम टीचर्स को उस लेवल पे ट्रेन कर रहे हैं कि जो ट्रेनर बन जाएं हमारे सर्टिफाइड, तो whenever we want any trainings, any certifications, we will definitely hire them for their services. Okay. One thing. Right. The other thing is they can be freelancers, they can be contractors, they can like have their own projects online या remote job या कुछ भी ऐसा in their own time. So this will open up a lot of opportunities for them. Achha, the reason I asked, about universities and students is also to understand, get a very fair understanding के skills कहाँ पे हैं, are we meeting the world demand or not? But it, as a matter of fact, there's this question that has been bugging me for the longest time. It feels कि technology जो है वो उस जगह पे ज़्यादा इंक्रीज़ करती है या बेहतर परफॉर्म करती है या बनती है एटलीस्ट जहाँ पे उसको वो माहौल मिलता है, ठीक है? चैट जीपीटी जिसने अभी आया रिसेंटली, हम लोगों को तो बाद में पता चला ना चैट जीपीटी का, और दुनिया को जो है वो स्वीप ऑफ कर दिया. पाकिस्तान के बारे में कभी हमने ऐसा नहीं सुना यार ऐसा एक ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर आया है, एवरीबडी इन द होल वाइड वर्ल्ड इज़ यूजिंग इट एंड दैट वाज मेड बाय अ पाकिस्तानी. व्हाट इज़ इट? आर देयर एनी सॉफ्टवेयर दैट पाकिस्तानीज़ हैव प्रोड्यूस्ड या हैं लेकिन ब्रांड नहीं किया? Fortune 500 कंपनीज उठा लें ग्लोबली, नहीं है कोई पाकिस्तानी. आज अगर हम दुनिया के नक्शे से गायब हो जाए ना, nobody would care, बिकॉज हमने कुछ ऐसी वैल्यू प्रोड्यूस की नहीं है, राइट? सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम डेफिनेटली. बट माजरत के साथ मसला ये है कि हम हैं एक जुगाड़ू को, हमें जुगाड़ तो निकालना अच्छा लगाते हैं. हाँ, हमें हर एक Okay. चीज़ में से ना कोई जुगाड़ निकालने हैं. आई वॉज वॉचिंग अ रील के जिसके अंदर जापान के अंदर उन्होंने शू पॉलिशर एक ऑटोमेटेड मशीन बनाई. ओके. पाकिस्तानी गया, उसने एक पाँव एक मशीन में डाला, दूसरा दूसरी में डाला, बिकॉज वो पैसे तब आपको चार्ज करती है जब आप दोनों पाँव साफ़ करा लेते हैं, दोनों शूज़ साफ़ करा लेते हैं. उसने एक से करा लिया, दूसरा दूसरा करा लिया. नो, या राइट, बिकॉज दे डोंट हैव दिस even thought, they never thought about कि अच्छा यार हमने कोई ऐसा जुगाड़ निकालना They can है rig या the system. yeah, they never thought, they never think about rigging, right? We are built in that way, right? So हमारा focus जो है ना, हमारी energy सारी की सारी इन चीज़ों पे ज़्यादा लगी होती है rather than कि हम कुछ बना लें. That's why we are more focused towards making the next, Infosys in Pakistan, DEVSINC, right? Next TCS in Pakistan, next Wipro in Pakistan. The only reason is कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, हमें सबके लिए कुछ ना कुछ इस तरह का बनाना है. And not just DevSync, we will uplift everyone with us. We have very bigger names already in the market that are doing an amazing job.
So it's not about ke DevSync is here to maybe like suppress them. No, that's not the purpose. The purpose is to grow together, right? Right. और जो बात आप कर रहे हैं कि कोई ऐसी प्रोडक्ट, आई थिंक ऐसी कोई प्रोडक्ट हमारी एग्जिस्ट करती नहीं है. देर आर मैनी इशूज़, देर आर मैनी थिंग्स जो इसका प्रॉब्लम है, लेकिन राइट नाउ द मेन थिंग वी नीड टू फोकस ऑन इज कि कैसे हम अपना एक इमेज बेहतर बना लें. प्रोडक्ट्स हम बना लेंगे, ठीक है, एक इमेज सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हमारे लोगों का ट्रस्ट होना शुरू हो जाए. बिकॉज वेन एवर पीपल नो कि दिस पर्सन इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, दे गेट शेकी. Of course. Yeah. They don't even want to like maybe work with us anymore. They don't want to explore Pakistanis. Yeah, exactly. Because in their mind, Pakistan is just a very maybe backward. Yeah, backward or terrorist state. Yeah. The narrative needs to be changed, and we need to build that narrative. Because अभी जैसे आपने भी बात की कि Bollywood, Netflix, ये वो सब कुछ, these play a lot of vital roles in building this narrative. Because आप जा के हर किसी को बात नहीं बता सकते, but these contents, everybody nowadays consume the content, right? So whatever you are selling them, they are buying it. Absolutely. So final question. What do you think? What are those skills that are going to be required in the next 10 years that our youth should be focusing on today? Right. It's a very good question. To answer that, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हर वो चीज़, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आज के दौर में जहाँ पे हम AI की बात करते हैं. एवरी अदर थिंग दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय राइटिंग अ स्मॉल स्क्रिप्ट. कोई भी एक छोटा सा हमने कोड लिख लिया, कोई भी छोटी सी हमने जो है वो उसकी एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट लिख ली और वो चीज़ें ख़त्म हो गई. Those jobs would be obsolete, okay, right? Those people would be replaced. लेकिन एक जो human element है, एक जो thought process है, एक जो problem solving skills और एक critical thinking है, AI can never replace that in my opinion. Example इसकी दे दो कि content writing की अगर बात करें तो आपके सारे essays जो है ना वो चैट GPT लिख देगा. आपके जो हैं even आजकल आप अगर जो काम Photoshop से ले रहे थे तो you can have different tools for that. आपकी AI आपको सारा कुछ मिडनाइट कर देता है. हाँ, मिडनाइट जर्नी है, बहुत सारे और टूल्स हैं, पिक्ट्री है, देयर आर मल्टीपल डिफरेंट टूल्स जो आपको सारी पिक्चर्स बना के दे देंगे. इवन पूरी प्रेजेंटेशंस, वीडियोस, हर एक चीज़ वुड बी देयर, राइट? ट्रू. बट जो एक क्रिटिकल थिंकिंग है दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. सेम गोज फॉर लाइक द टेक्निकल साइड. एवरी मैनुअल जॉब in technology, manual QA हो गया या कुछ भी ऐसा, if people are not getting changed, the technology will change them. They will make them obsolete. अब क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए? The only thing that we need to focus on is कि ज़रूरत किस चीज़ की है. What you need to learn in your life is कि improve your problem solving skills, improve your critical thinking, and focus on like even if you are a QA, you are a developer, focus on कि आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू रेलेवेंट कैसे रह सकते हो, राइट? किस तरह से आप चीज़ों को अपने लिए ही ऑटोमेट करके उनको बेहतर अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हो, राइट? ओके. सो एवरी अदर जॉब दैट इज़ मैनुअल, दोज विल बी रिप्लेस्ड, बट दिस ह्यूमन एलिमेंट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर. दिस क्रिटिकल थिंकिंग, नो AI कैन रिप्लेस इट. सो इसका मतलब ये हुआ कि इन एडिशन टू टेक्निकल स्किल्स जो वो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं हमारे, कम्युनिकेशन के हो गए, क्रिटिकल थिंकिंग के हो गए, इंटरेक्शन के हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गए, दे आर स्टिल रेलेवेंट. या दे आर स्टिल रेलेवेंट बिकॉज ये उस टाइम पे भी थे जब मशीन्स आना शुरू हुई. द पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि शायद हमारी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी. नहीं, वी नीडेड मोर पीपल टू रन दोज मशीन्स, राइट? Because the human element was required. Now people are again afraid of कि AI आ गई और ये सारा कुछ हो गया. The jobs will be obsolete only those कि जो सिर्फ और सिर्फ data entry type jobs थी, right? But to run those AI tools or anything, we still need people. Yeah. So these tools are here to facilitate people. These will produce more and more jobs. आजकल generative AI की ही बात हो रही है हर जगह. Every other company, every other startup wants to build their system in AI. They want to have some AI tool. They want to have a machine learning platform, वगैरह वगैरह. Because this is a niche that people started following, right? So जब कोई एक चीज़ का boom आता है, तो we need people to work on that as well. So this is here to produce more jobs. Definitely, it's a shift and it's a change.
Now the need of the hour is कि people change with that instead of just like being very rigid कि जैसे 1857 में सर सैयद कहते थे कि इंग्लिश सीख लें तो वही said कि ये अंग्रेज़ों की ज़बान है, काफिरों की ज़बान है, हम नहीं सीखेंगे और आज हम that is international mode of communication, we cannot survive without it. Absolutely, right? exactly. So if we don't believe in change at the right time, that change will force us to be changed. Exactly. Yeah. आपको चेंज करना ही पड़ेगा. Exactly. जैसे आपने उस वक्त अंग्रेजी सीखी थी, उस टाइम के उसकी सिग्निफिकेंस थी. अच्छा, आज तक वो मेरा ख्याल है वो जंग चल रही है. कितनी हो गई है. Exactly. आपने सवाल किया, इंडिया हमसे आगे है, उन्होंने रियलाइज किया सही टाइम पे कि कब कौन सी चीज़ कब कैसे करनी है. We never realized that, right? So change is the only constant. There is nothing that is constant. Exactly. Well, thank you very much, Talha. This was such a wonderful conversation with you. And to have talked about the IT sector and the exports and the skills that are going to be in demand. And your vision, as a matter of fact, is something phenomenal. And I hope that DEVSINC, Usman, and everyone who's leading, who's working at DEVSINC, they become successful in that. Inshallah. Well, thank you very much to all of you as well. I hope you enjoyed the conversation with Talha. And inshallah, we're going to see you with another episode of Out Loud with Ammaar Season 4. Take care.